Now, special occasion calls for a special episode. And since it's freedom that we're celebrating today, I think it's a good time to discuss and, move a step closer to financial freedom. But what is financial freedom? I guess it means different things to different people. Different generations perceive it differently. But undoubtedly, freedom is incomplete till you are still bound by financial clutches. So how to break free? Well, that's what we are here to discuss today. So today I have with me my colleagues from Value Research. There are some freshers, there are some those with a little experience, and then there are veterans who will guide us through this, who will tell us how to achieve our financial goals. Mansi, you are a fresher. Tell me, what does financial freedom mean to you at this stage of your life? फाइनेंशियल फ्रीडम मेरे लिए है कि इनफ सेविंग्स, फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट्स और अपने और अपनी परिवार के लिए जिस तरीके की लाइफस्टाइल मैंने सोची है उस तरीके की लाइफस्टाइल उनको दे पाऊँ। बात करें अगर इस बारे में, तो मैंने ये सोचा है कि मैं 8 साल के अंदर अपने खुद के लिए एक घर और एक गाड़ी खरीद सकूं। आई थिंक इट्स क्वाइट अ टैंजिबल थिंग। अच्छा है कि आपके पास आप बिल्कुल एक स्पेसिफिक चीज़ के बारे में सोच रही हैं, पर इस पे लग जाइए, देखिए कि कितने रुपए का एसआईपी से कितने दिन में डाउन पेमेंट हो पाएगा। और एक चीज़ ध्यान देना चाहिए कि जैसे आप मकान लेंगी, ये मकान लेना एक बहुत इम्पॉर्टेंट और अच्छा एस्पिरेशन है, क्योंकि उससे आपका किराया बचने लग जाता है और जो आप कंफर्ट डिराइव करते हैं कि आप शेल्टर ज़िंदगी भर के लिए है। गाड़ी कंजम्पशन है, उसके ऑल्टरनेटिव्स है। जिस दिन से आप गाड़ी लेती हैं, दुकान से लाते ही वो कम दाम का हो जाता है और रोज़ वो थोड़ा घिसता रहता है, डिप्रिशिएट करता है। तो उसको कंजम्पशन के तौर पे देखिए। इस चीज़ के लिए वैल्यू रिसर्च ऑनलाइन यूज़ कीजिए, देखिए कितने रुपए का, और थोड़ा इसको और फ्लैश आउट कीजिए, कितने रुपए का घर, कितने दिन में, कहाँ पे, तो आपको पता चलेगा। क्योंकि ये जो गोल है ये बहुत ही वाइल्ड है। यहाँ पे आसपास 15-20 लाख रुपए का भी अच्छा नया मकान, अपार्टमेंट मिलता है 2 बेडरूम का, जो कि बॉम्बे में 2 करोड़ रुपए का मिलता है, वैसा ही मकान। और वैसा ही यहाँ पे अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर का कॉलोनीज में वैसा घर 6 लाख का भी मिलता है, और वैसा ही घर प्रीमियम सराउंडिंग में शायद 50-70 लाख रुपए का भी मिलता है। तो ये बहुत ही वाइल्ड है, ये बहुत ही बड़ा एरे है। तो थोड़ा इसको ज़्यादा क्रिस्टलाइज कीजिए और ब्रॉडली इस पे काम करना शुरू कीजिए। Maushmi, this is your first job. Have you already started investing since you're working with Value Research? Tell me. Yes, I started investing in SIP. So I started my SIP this month only. So the mindset why I started investing, it all started when the transition happened. Like I was a student and I then became an employee at Value Research. I got my first salary and then I thought about I just thought that सारे पैसे जो है मैं गिफ्ट्स खरीदने में लगा दूंगी, अपने लिए, फैमिली के लिए, फ्रेंड्स के लिए। मैंने यही सोचा था। तो मेरी फर्स्ट सैलरी 4 दिन में सारी उड़ गई और मेरे पास सिर्फ 3,000 रुपये बचे थे और पूरी मंथ बचा ही हुआ था। एंड आई रियलाइज्ड कि शायद ये गलत तरीका है, मुझे एक प्रॉपर बजट बनाना चाहिए, बिकॉज आई हैव टू बोरो मनी फ्रॉम माई फादर। लाइक फॉर द फर्स्ट 3 मंथ इट वॉज ऑल लाइक हसल बसल, यहाँ वहाँ पैसे इधर उधर हो रहे हैं। देन 3 महीने बाद मैंने क्या किया, मैंने एक्सेल फाइल बनाई, उसमें अपनी बजट्स बनाई कि मैं ट्रांसपोर्टेशन में कितने पैसे लगते हैं, देन लंच में कितना लगता है, एंड आई जस्ट कैलकुलेटेड, यूज सम फॉर्मूलाज, एंड नाउ आई डू इट लाइक एवरी मंथ। सो एक बजट बना के एक सेविंग बनती है कि एंड में जाके इतने पैसे शायद बच जाएँ। बट ऑल्दो ऐसा होता नहीं है कि 1 मंथ में मतलब जितनी भी है वो सब ख़त्म ही हो जाता है। लेकिन स्टिल आई स्टार्टेड टू डू इट इन अ प्रॉपर मैनर। तो आई थिंक थोड़े महीनों में मैं सीख जाऊंगी कि सेव भी कैसे करते हैं। एंड देन देयर इज़ वन थिंग, लाइक आई डू SIP फॉर लाइक 2000। सो मैं इस मंथ से स्टार्ट कर रही हूँ, तो आई जस्ट add it as my expenditure, but it's basically a saving only and it's like my first step toward investment. So हाँ, यहाँ से start हुआ ऐसे। Ashutosh, your suggestions for Maushmi? No, great. I think it's great that you are thinking about investing. You've already started investing from a very early stage, and we often believe that first step is often the hardest. And once you take that, then it becomes a habit. And that habit leads you to bigger things and better things. And it's great that you've taken the first step. If I reflect back when I was in your age and when I was starting off my career, and that happened to be with Value Research, and being at Value Research itself was a great motivation to start off.
but it was easier for us guys because we were not exposed to so many wants. We did not have internet in our pockets at that point in time. We did not have buy now pay later, which today's generation has. But despite all those temptations, you've been able to carve out some amount from your savings. Is great. So well done, and my best wishes. But make sure that you don't stop at it. Every year, make an effort to keep increasing this 2000 rupee amount. And once you do that, before you know it, you'll be landing up with something very substantial. All right, so Saiba, you have a certain experience. What is your financial goal at this point of time, and what would you suggest to your juniors here? So for me, the journey of saving rather started about 8 years back, much before even I started working, because I felt that saving is imperative, being in the Indian culture, and that's how I was brought up. But yes, the financial goals have evolved over a period of time, and from creating a lump sum college corpus to building up my first emergency fund, and then realizing ki saving and investing are two different things. And now my goal after having cushion, which is the emergency fund, is to eventually create a corpus which can fund my passive income, which can fund my lifestyle expenses. So I do certainly have a number in my mind what it needs to be, so that I don't have to worry about the daily expenses, because I did commit a lot of mistakes earlier. For the longest period of time, I did not know saving and investing are two different things. I invested in wrong instruments. So there was that bitter lesson. Talking about mistakes, one thing that I'll very forcefully recommend is just don't stop your SIPs. And I, at some point in time, learned it the hard way. It did bring an opportunity loss, but also the realization that it has not to be repeated. The other thing about this, as I said, it's a habit. It feeds on its own self, and that creates that snowballing effect. And once you stop somewhere in between, it becomes hard to get back to that habit. So that's my big lesson. For a lot of us, humans tend to procrastinate. I profess that if you have to procrastinate on the tendency to stop the SIP. So whenever you are faced with the dilemma that SIP कुछ काम नहीं कर रहा है और इतना टाइम इन्वेस्ट करने के बाद भी कुछ रिटर्न तो मिला ही नहीं है, and you are getting tempted to not continue, just tell yourself that let me think about it 6 months later. And once you do that, you probably don't end up stopping your SIPs, and that itself is a trick. Arpit, like Ashutosh mentioned a little while back, we didn't have those options of buying things on EMIs. I think credit cards were also new at that time, and we were not so much into it. There is peer pressure, I guess, and then you have greater aspirations. Naya iPhone aaya hai, naya bike kharidna hai. Why don't you tell us about your journey so far? So ever since I have started working, so I have brought up like that I keep saving money, but I did not have any understanding on investments and all. So I keep saving money, and I just spend around like in my own things. I had a lot of things on my shoulders, like parents' responsibility and education loan and all. So my whole monthly salary went like anyway. So what I was doing, I started doing budgeting. I kept on making a record, like where do I have to spend more, and if there is anything for my own luxury, I have to see, I have to buy. What I was doing is I was saving it. This was the time when I was not in value research. So when I came to value research in like around 2015 or 16, so I started understanding about the investment. And then from that time also, I was just learning. Didn't start my SIP. But I was saving. I was much aware of how much you have to save every month. And in the result of that, I was able to buy my favorite dream bike, which I was dreaming since my college time. From that moment, I just start dreaming of buying new things. Like I bought MacBook that time. And then I started like looking for more and more things like
like I was always aspired for enhancing my new skills by learning new things online, but I always was caught up with this, like I'm not having much money or so. So what I was doing is I started SIP from that time, and it's been now 4 years, 3 to 3.5 years of doing SIP constantly. And I also developed this habit of whatever money I kept saving, I just put it in the lump sum at the end of the month. And I was able to save it because I have seen so many youth around me, my friends, who just buy things on, like Ashu sir was sharing about buy now, pay later things. And at the end of last week of the month, everyone was desperately waiting for Pehli Tarikh. So that's what I learned from all of these years. And now freedom for me is to really freedom to travel, freedom to buy more high-end bikes. That is what my more goal. Would you like to add something here, or suggest something maybe? No, I think he's in an age where he should be spending, because it's good to have your bike, but be aware that it's a depreciating asset. It's a convenience, and of course, if you are able to couple it with pleasure, by all means, you should do it. I would not like to be preachy with any of you, because be aware that you need to save, you need to invest, you need to do some budgeting, and first 4 months do nothing. Spend all of it and still take money from your dad, because that is something which you won't do it 5 years later. So might as well have the fun. There's the joy of all that, but I think this is the time when you should be building your foundations in terms of forming your habit. Even a 500 rupee SIP is critical. It's not about 5,000 or 2,000 or 2,500. The whole thing that you will have accumulated 6,000 rupee. In 3 years' time, I don't think we will have to teach you what's the charm of doing this thing. How a small saving invested turns into a meaningful capital, which you could not think of. Your 3.5 years SIP accumulation. We don't need to impress you or persuade you that you should be doing that. So, great going, very impressive. I don't think we were as smart as when we were, as old as you. I would add is, and I'll share an anecdote, one conversation I happened to have with a younger relative about your age, I think just last week. So, I have this cousin of mine, a young girl who just got married. She is into a lot of these new phones and fancy gadgets and all, and she likes to buy a fancy phone every year. She likes to change her phone every year. And she justifies that financially, and she says by selling it in a year, she's able to realize a good resale value of her old phone, and then she's able to buy a new one, and the resale amount contributes partly to the price of the new one. So she believes that this is a financially sound decision, and this is a smart way to go about it, without realizing actually how much money she is spending incrementally on that. So that's a realization that one should have. So by all means, go live your dreams, but a little sensibly. Rishi, you come here with a little more experience. So, can you please share what has been your investment mantra? जहाँ तक मेरी अपनी बात है, तो ये कहानी में अगर इस तरह से शुरू करूँ कि क्या नहीं करना चाहिए, तो मेरे पास 99 पॉइंट्स होंगे, क्योंकि मैंने वो सब कुछ किया है जो नहीं करना चाहिए था और काफ़ी अरसे तक किया। उसकी वजह ये होती है कि इन्वेस्टमेंट जो होता है वो हमारी अपनी पर्सनालिटी, हमारे अपने अनुभवों से बड़ा गहरे से जुड़ा होता है। मतलब कोई एक बार नहीं है कि ये सही गलत इतना ब्लैक एंड वाइट हो। अब किसी की ज़रूरत बाइक की है, जैसे अर्पित बोल रहे थे, और इनकी घर की है, मानसी की। सो मेरा जो परिवार है वो लिटरेरी लोग हैं। मेरे पेरेंट्स दोनों ही लिखने वाले, उनके सारे दोस्त लिखने वाले। तो हमारे घर में किताबें बहुत सारी थी, मगर फाइनेंस पे कोई किताब नहीं थी सिवाय दास कैपिटल के, विच इज़ क्वाइट ऑपोजिट ऑफ व्हाट इट इज। और प्रेमचंद के फटे जूते जो है वो बड़े एपिटमी थी उसकी कि आपको कैसे रहना चाहिए। सो
उस तरह से जो जब आप नहीं समझ पाते हो अपने ग्रोइंग ईयर्स में, तो आप काफ़ी सारी गलतियां करते हो, क्योंकि करना आप भी चाहते हो और मैं भी चाहता था। तो बहुत कुछ खरीदा, बहुत कुछ चीज़ें ली, कहीं प्लॉट ले लिया यही ग्रेटर नोएडा में, फिर लगा कि वो गड़बड़ है, फिर एक यहाँ से फ्लैट ले लिया, जो कि अब मैं उसे निकाल के इक्विटी में जाने के अपना इन्हांस करने के उसमें हूँ। सो ये जर्नी जो है वो बड़ी लंबी अजीब सी रही, मगर हाँ अब जाके और आपसे कुछ समय पहले ये समझ में आया कि आपको जो है इन्वेस्टमेंट क्या है ना। इन्वेस्टमेंट के अलावा जैसे आप बता रहे थे साहिबा कि इन्वेस्टमेंट, बचत जो होती सेविंग्स, और उसके अलावा जो ट्रेडिंग है बीच में, क्योंकि वो भी कुछ करने की कोशिश की है। धीरेन जो है वो क्रिप्टो के बड़े खिलाफ है। सो एक बार तो मैंने उसमें भी थोड़ा बहुत खिलाफ नहीं है, अगर आप क्रिप्टो में अगर आपका कुछ लेना देना है तो आपका नौकरी जा सकता है। हाँ तो एक टाइम पे वो भी हुआ, क्योंकि उस वक्त इतनी बात नहीं होती थी कि क्रिप्टो है क्या, है ना। आपसे कोई 2 साल पहले 3 साल पहले था। वैल्यू रिसर्च में काम करने के लिए जरूरी है कि आप क्रिप्टो के बारे में अविश्वास रखें, पूरा विश्वास रखें। सो ये सारी बातें, और बहुत सारे यंगस्टर्स जो हैं जिनसे वैसे भी बात होती है, मेरे नेफ्यूज हैं, तो वो बड़े अवेयर हैं अब, और वो इस बारे में इस फर्क को समझते हैं। वो उनके पास इंफॉर्मेशन का बड़ा एक्सेस है, जो कि शायद मुझे लगा कि मेरे साथ मेरा ये अनुभव रहा कि मुझे नहीं उतना रहा शुरुआत में, बट चीज़ें धीरे धीरे बदली। असल में आप जिस दौर से गुजर रहे हैं ना, ये लोग बड़े भाग्यशाली हैं कि शुरुआत में ही इन्हें काफ़ी ग्राउंड रूल्स पता चल गया और 2-4 महीने अपना खर्च किया, बजट। तो ये कोई बहुत बड़ा ब्लंडर नहीं है। भविष्य में पता चलेगा कि हाँ वो 4 महीना भी यूजफुल हो सकता था, लेकिन इसके बारे में खास चिंतित नहीं होना चाहिए। आपकी जो स्थिति है ये सीखने का कॉस्ट है, और अगर 10-12 साल अगर आप ये फंबल कर रहे थे, सोच देख रहे थे कि ये भी होता है वो भी होता है, और आम धारणा पे जा रहे थे, क्योंकि हर एक आदमी प्लॉट खरीद रहा है, हर एक आदमी मकान खरीद रहा है, हर एक आदमी स्पेकुलेट कर रहा है, हर एक पैमाना ही ये हो गया था कि वो उस वक्त आज से 15 साल पहले कि आपके पास अगर एक दूसरा है घर तो आप ज्यादा नहीं, ये मतलब ये कोई अनयूजुअल बात नहीं है। हर एक की स्थिति यही थी, तेजी से दाम बढ़ रहा था, लोग स्पेकुलेट कर रहे थे। एक कहने को बहाना मिल जाता है कि अरे मकान है भाई, मतलब ये रियल है, बाकी सब चीज अनरियल है जैसे। तो रियल स्टेट के बारे में तो धारणा यही है कि पैसा बढ़ता ही है। केवल पिछले 10-12 साल में लोगों को पता चला है कि इसमें पैसा डूबता भी है, बिल्कुल, और नहीं बढ़ता है, बिल्कुल। तो अभी तो घर खरीदने का गाइडलाइन ही बदल गया है कि आप घर के लिए जब पैसा दीजिए तो घर मिलना चाहिए। सबसे पहले तो लड़ाई ये है। उसके बाद वो आपके मीन्स में होना चाहिए, 1/3 से ज्यादा आपकी आमदनी मकान खरीदने के लिए ना जाए। जब आप मकान खरीदे तो उसमें रहें ताकि किराया बचना शुरू हो जाए। अगर ये 2-3 चीज आप करते हैं तो अपने आप सब दुरुस्त होगा। अगर ये नहीं करते हैं तो ये एक स्पेकुलेटिव इन्वेस्टमेंट है। आप दूसरों के भरोसे पे है कि और कोई आदमी आएगा जो कि ज्यादा दाम देने को कभी तैयार होगा। और ये आप अकेले नहीं हैं। मेरा एक दोस्त है जो कि आज से 15 साल पहले एक एयरपोर्ट आने वाला है, उसकी वजह से वहां पे एक फ्लैट खरीद करके अमेरिका में बैठा हुआ है। तो मेरा भी प्लॉट जो था वो वही नजदीकी था। तो ये कहानियां, ये हमारा जो ऑफिस है, ये आज से 18 साल पहले कोई बोल रहा था कि यहाँ पे मेट्रो आ जाएगा, जिसको आने में करीब 15 साल लगा। लेकिन कहानियां होती हैं, लोग बताते हैं, वो सच भी हो जाता है, लेकिन वो जो समय लगता है वो वेट करते हुए आपका पेशेंस खत्म हो जाएगा। तो ये इन्वेस्टमेंट नहीं हो सकता है। और ये जो इन्वेस्टमेंट का जो सारा के बारे में जो सारा मिथ है, मिसकंसेप्शंस है कि कोई खास आदमी को पता है, बाकी लोग काफी गर्व से बोलते हैं कि वो बहुत फाइनेंशियली नाइव हैं। नहीं जानने में परिवारों में कहा जाता है कि हाँ एक बड़ी वो है कि ये बड़े सिंपल से आदमी हैं, ये बड़े फाइनेंशियली स्टूपिड हैं। तो ये कोई गर्व की बात नहीं है। आई थिंक एक और चीज जो बदली है, पहले घरों में बात ही नहीं होती थी बच्चों के साथ बैठ के पैसों के बारे में, ये अच्छा नहीं माना जाता था। आई थिंक विद टाइम दैट हैज आल्सो चेंज्ड। ये एक बहुत गहरी बात है। हमारा फाइनेंशियल एजुकेशन सिस्टम ऐसा है कि फाइनेंस के बारे में स्कूल में कभी हमारे करिकुलम में ये सब चीजें सिखाई नहीं इसको तो सर्वाइवल टेक्निक की तरह बेसिक बुनियादी होना ही चाहिए। आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, सिविक्स बहुत कुछ नहीं जानेंगे तो आपका काम चल जाएगा। पैसे से ताल्लुकात सबका है, और खास कर बेवकूफ़ी से बचने के लिए, क्योंकि दूसरा आदमी घात लगा के बैठा हुआ है कि आपका पैसा कैसे छीन ले, और उससे बचना तो सबसे पहला चैलेंज है। और चीजें जो हैं बदली हैं बड़ी तेजी से। हम देख भी रहे हैं, नंबर ऑफ
ये जो अकाउंट्स हैं इसके इन्वेस्टमेंट के डीमैट के, ये बढ़े हैं बड़ी तेज़ी से अभी हाल में। मगर मैं जहाँ तक याद करता हूँ अपने पिछले उसको और बचपन को, तो उसमें जब इन्वेस्टमेंट की बात होती थी ना, तो वो एलआईसी से आगे नहीं बढ़ती थी। और LIC वो और FD। हाँ हाँ, और अगर आप पीएफ, जो अगर आप सरकारी, जैसे मेरे फादर थे उसमें सरकारी में है, तो पीएफ है तो सब कुछ है। मतलब आप इंतजार कर रहे हैं कि आप जब रिटायर होंगे तो वो एक और घर, एक घर ले लिया जाएगा, एक ये ले ली जाएगा। उससे इन्वेस्टमेंट वाला वो माहौल टाइम नहीं एक ऐसा था कि इक्विटी शायद सच में एक स्पेकुलेटिव एसेट था। जब हम 80s की बात करते हैं, 90s के भी शुरुआती दौर की बात करते हैं, तो उस वक्त एक्चुअली में कॉर्पोरेट गवर्नेंस स्टैंडर्ड्स, डिस्क्लोजर स्टैंडर्ड्स, जो ब्रोकर्स का एक कहते हैं कार्टेल होता था, ये सब चीज़ें रियलिस्टिक थी और सच में एक प्रिविलेज्ड एक्सेस आपको चाहिए होता था। लेकिन अब चीज़ें बदल गई हैं, बहुत डेमोक्रेटाइज हो गई हैं। नहीं, पर मैं एक चीज़ अभी आप लोगों को वार्न करना चाहूँगा। बहुत सारे लोग ना आज इन्वेस्टमेंट और स्पेकुलेशन में जो अंतर है वो पता नहीं चलता है। अब मैंने इन्फोसिस का शेयर खरीदा और आपने खरीदा, आपके लिए हो सकता है कि वो इन्वेस्टमेंट हो, और मैंने इसको अगर बिना किसी रीज़न के, अगर किसी इस वजह से खरीदा है कि कल इसका दाम बढ़ जाएगा और मैं बेच दूंगा, तो ये स्पेकुलेटिव इन्वेस्टमेंट है। तो एक ही शेयर का दाम एक ही शेयर हम दोनों खरीद रहे हैं। मेरा स्पेकुलेशन हो गया और आपका इन्वेस्टमेंट हो गया, क्योंकि आप सोच रहे हैं कि एक अच्छी कंपनी है, अगले 10 साल तक ये कमाती रहेगी, इसकी आमदनी बढ़ेगी, इसका मुनाफा बढ़ेगा और ये ठीक ठाक लोग चलाते हैं, इस वजह से आप इसको खरीद के इस पर बैठना चाहते हैं। और ये जो आसान हो गया है बाजार में लगाना, इसके वजह से बहुत सारे लोग स्पेकुलेट कर रहे हैं और वो मान रहे हैं, अपने आप को दिलासा दिला रहे हैं कि वो इन्वेस्टर हैं, और ये काफ़ी बड़ा रिस्क है। इससे लोगों को सावधान होना चाहिए। और ये चलती बाजार में ये बड़ा अच्छा लगता है कि आपने लगाया और पैसा बढ़ गया, आपको फॉल्स कॉन्फिडेंस हो गया कि ये फॉल्स कॉन्फिडेंस नहीं, बल्कि आपने अगर ठीक ठाक कंपनी में लगाया, उसका दाम बढ़ रहा है, तो आपको लगा कि आपने कुछ खास काम किया है, या आपके एनालिसिस का, रिसर्च का या इंस्टिंक्ट का ये रिवॉर्ड है। और जब बाजार गिरता है तो धाराशायी हो जाता है, पैसा आपका डूब जाता है, आप बेच नहीं पाते हैं। और आप, क्योंकि निवेश में डायरेक्टली इस तरह से बाजार में निवेश करने में, एक तो कि इन्वेस्टमेंट और स्पेकुलेशन में अंतर बहुत कम है। दूसरा चीज कि अच्छी कंपनी, अच्छा रिसर्च, बेसिक चीज समझना, ये बहुत मुश्किल काम नहीं है। इसके लिए जो टेम्परामेंट चाहिए वो आने में समय लग जाता है। आप सोचिए कि जितनी भी हम अच्छी कंपनी की बात कर रहे हैं, पिछले 25 साल में भारत में जितनी भी अच्छी कंपनी, जिसमें कि आपका पैसा 50 गुना बढ़ा होगा, 100 गुना बढ़ा होगा, HDFC बैंक जिसमें कि आपका लगाया हुआ 10 रुपये शायद 30,000 रुपया हो गया होगा, जादू हो गया। वैसे ही उन कंपनियों में भी पिछले 25 साल में 7-8 बार ऐसे मौके आए थे जिसमें कि अपने रीसेंट पीक से वो आधा हो गया था। तो अगर आपका पैसा आधा हो जाए, अगर ये पता नहीं है कि आप क्यों कर रहे हैं, तो आप फिर स्पेकुलेटर हो जाएंगे, आप फिर महंगा खरीदेंगे और सस्ता बेचेंगे। क्योंकि उसमें तो टेम्परामेंट बिल्ड करना, और वो इसलिए मेरी सलाह होगी कि एक हायरार्की है, एक प्रोग्रेशन है कि आप शुरू में जैसे साइकिल चलाते हैं, 2-3 बार गिरते हैं, घुटना छिलता है, फिर कुछ करते हैं, फिर एक गियरलेस बाइक चलाते हैं तो आसान होता है, फिर एक आप गियर वाला बाइक चलाते हैं, फिर आप भारी भरकम बाइक चलाते हैं, आप जैसे चलाते हैं। तो उसी तरह से इन्वेस्टमेंट का भी एक, मुझे लगता है कि अधिकतर लोगों को एक प्रोग्रेशन फॉलो करना चाहिए कि किसी तरह से आप सबसे पहले, आप अगर कुछ नहीं समझ में आता है तो रिकरिंग डिपॉजिट कर दीजिए, किसी भी तरह की अनिश्चितता नहीं होगी। उसके बाद जब थोड़ा सा समझिए तो एक शुरू कर दीजिए एक बैलेंस फंड से, जो पैसा आपको 5-7 साल नहीं चाहिए, एक अग्रेसिव हाइब्रिड फंड, और इस पे बने रहिए। मुझे लगता है कि 5-6 साल का ट्रेनिंग का कोर्स होना चाहिए, कम से कम 500 रुपये इन्वेस्ट करा के, क्योंकि ये करने से आपको पता चल जाएगा कि कंपाउंडिंग ज़्यादा रेट पे उसका असर क्या होता है। इसमें आपको समझ में ये आएगा कि गिरे हुए बाजार में पैसा लगाने का क्या फ़ायदा होता है, क्योंकि वो जो आपको लगता है कि नुकसान हो रहा है कि आपने लगाया और पैसा बढ़ ही नहीं रहा है, वो एक्चुअली आपका फ़ायदा हो रहा है कि आप सस्ता खरीद रहे हैं। उसके बाद फिर आप इक्विटी के लिए तैयार हो पाते हैं। तो ये तैयारी में 5 साल लग जाता है,
और ये टेम्परामेंट अगर आप बिल्ड कर लेते हैं तो इसका फ़ायदा आपको ज़िंदगी भर मिलता है, क्योंकि आप फिर घबरा के महंगा खरीदेंगे नहीं और सस्ता बेचेंगे नहीं, और यही सबसे बड़ी गलती है। तो और ये हमारे बात करने से और लोगों को समझाने से नहीं समझ में आता है, आपको अपना पैसा लूज़ करना पड़ता है और फ़ायदा भी आपका ही होता है। सो द preparatory time is 5 years. You start with a recurring deposit or a balanced fund, then after one or at least 2-3 years get into all equity, because all equity is, you have to really understand the free fall, experience it. Me telling you will not help, or anybody telling anyone else will not help. You have to see that, okay, with great difficulty you accumulated 50,000, and then once in a while you looked at it and you saw that it's 25,000. The money just disappears in thin air, and that is the time when it scares you. And you have to really understand that unless you are invested and you stay put, you won't learn. Then after 5 years, get into an equity fund. Don't be tempted to invest in equity directly till you have 2-3 things. One is that you are willing to learn about the company, at least the basics. You are willing to learn how it works, profit, growth, and managed by a good, because you are becoming a partner. You are not looking at the ticker of a company. With that understanding, you have to understand what business are you buying, and if you don't do it, you are good enough with equity funds. So that's about it. It's not something where you should progress in a hurry. Saima, you wanted to add something? Certainly. So, we were talking about, there's a lot of not lack of awareness or lack of education. I think our government has very beautifully and much what was required, realized it. For the sake of same, they have introduced this from the elementary and at the grassroots level. They've introduced it into our new education policy 2020 as well. And other than that, they set up a not-for-profit organization under the name of National Center for Financial Education, which is very actively training people from school level and up. And I think it is just increasing the probability of student getting acclimatized to, there is something known as finances. We just started the conversation that it was a taboo. So I think they're increasing that awareness that it's not a taboo, it's a everyday phenomenon that we need to be aware of. Becoming mainstream financial understanding. Yeah. So I think that's something that I think India is in a good place, and finally we are seeking that financial freedom as well. As a concluding remark, I'll just make a mention about compounding. It came into the conversation at some point in time in between, but I think it is the most beautiful beast here when it comes to investing. और I guess सबने वो खरगोश और कछुए वाली कहानी तो सुनी होगी. So think of compounding as something which starts off like a tortoise and continues to be a tortoise for a fair amount of time, but then miraculously transformed into a galloping rabbit, which takes your net worth higher and higher. So compounding is one of the most potent forces, and the earlier you start, the more time you give for it to work to your advantage. I guess that was an insightful conversation, and each one of you has a takeaway for yourself from here. With that, it's a wrap on this episode. Thank you for watching. Keep watching this space for more information, and if you like the show, do subscribe to our YouTube channel. Take care. Here's wishing a very happy Independence Day once again.